Assalamualaikum. We're discussing the topic database management system. In this video, we will talk about its main two components. First one is the disk space manager, and the second is the buffer manager organized. The disk space manager is responsible for storing physical data items on disk, managing free regions of the disk space, hiding device properties from higher architectural levels, mapping physical blocks to track and sectors of a disk, and controlling the data transfer of the physical data items between external and internal memory. डिस्क स्पेस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फिजिकल डाटा आइटम्स होते हैं डिस्क से उसको उनकी सॉर्टिंग करना, फ्री रीजन डिस्क स्पेस को मैनेज करना, प्रॉपर डिवाइस प्रॉपर्टीज को हाइड करना हायर आर्किटेक्चर लेवल से, और फिजिकल ब्लॉक्स को ट्रैक करने के लिए मैपिंग करना, और कि सेक्टर ऑफ डिस्क को एंड डाटा ट्रांसफर को फिजिकल आइटम के जरिए एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी के जरिए के लिए ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल करना. The second is the buffer manager organize and assigning limited main memory or area called buffer. तो buffer managers होते हैं वो एक limited main memory होती है जिसे हम buffer कहते हैं. A buffer may be a buffer pool and may comprise several smaller buffers. एक buffer को हम buffer pool भी कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत से smaller buffers होते हैं. Components जैसा higher architecture levels may have a direct access to the data items in these buffers. अब जो हाई आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स लेवल्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो इस पूल से डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर सकते हैं डाटा में इस बुफर से. We discuss data structure that are used to represent both data in memory as well as on disks, such as fixed and variable length record, large binary objects, heap, sorted and the clustered files, as well as the different type of the index structure. अब हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों मेमोरी को भी और डिस्क को भी. जैसे कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स, लार्ज बाइनरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हीप, सॉर्टेड जो क्लस्टर्ड फाइल्स होती हैं उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. given the fact that database management system must manage data that is both resistance in the main memory as well as on disk, one has to detail with the reality that the most appropriate data structure for data sorted on a disk in different form the data structure used for algorithms that run in the main memory. Thus, when implementing the storage manager, one has to pay the careful attention to selecting not only the appropriate data structure but also to map the data between the efficiency. Also, given the fact that the database management system, अब जो database management system होता है उसको डाटा को मैनेज करना होता है दोनों में, मेन रेजिस्टेंस मेमोरी की मेन रेजिस्टेंस में, उसके साथ साथ डिस्क में भी. वन हैज़ टू डील विद द रियलिटी दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर एक है उसको डील करना पड़ता है रियलिटी के साथ, जो कि मोस्ट जो अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर होता है फॉर डाटा सॉर्टेड और जो डिस्क पे डाटा सॉर्टेड होता है उसके साथ डिफरेंट फॉर्म में. और द डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर और जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है लॉगरिथम्स के लिए जो मेन मेमोरी में होते हैं, उसके दो चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, मेन मेमोरी के डाटा को और जो लॉगरिथम्स के लिए यूज होते हैं, और जो मेन मेमोरी डिस्क पे होती है उसको. So when implementing the storage manager, one has to pay the careful attention to selecting not only the appropriate data structure but also map the data between them efficiently. In addition to the above two components, so today's modern database management systems include a transaction management subsystem to support concurrent execution of the queries against the database and recovery from the failure. Although transaction process is an important and complex topic, it is less interesting for our investigation of data structure and is mentioned here only for the completeness. अच्छा, इसके साथ साथ जो दो ऊपर कंपोनेंट्स बताए गए हैं बुफर और उसके साथ हमारे पास था बुफर मैनेजर और डिस्क स्पेस मैनेजर. इन दोनों के साथ साथ एक और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सब सिस्टम. अब ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट सब सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट करता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द क्यूरीज की एग्जीक्यूशन के लिए डेटाबेस के अगेंस्ट और रिकवरी फ्रॉम द फेलियर से रिकवरी के लिए. अल्था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, कम्प्लेक्स टॉपिक है और लेस इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टिगेशन डेटाबेस डाटा स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन के लिए. इसी सिर्फ यहाँ मेंशन किया गया है इसको कंप्लीट करने के लिए. द रेस्ट ऑफ द
this chapter organized as follows. Section 60.2 describe important data structure used during query evaluation, data structure used to buffer management and the data structure used by the disk space manager. अब जो हम ये जो पढ़ रहे थे इसमें इस चैप्टर में बाकी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है ड्यूरिंग क्वेरी एवोल्यूशन के, और बफर मैनेजमेंट है, और उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर यूज बाय द डिस्क स्पेस मैनेजर. हाउ वी विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.